Hello everybody, my name is Amit and you're watching Aptitude 360.online. This is video number 3 of this series. If you haven't seen video number 1 and 2, go in the comment box or you go over here, but make sure that you have seen those two videos. I'm going to talk about what is the meaning of ambidextrous and adroitness in this video. हम कैसे सीखते हैं? यहाँ पे हम हमेशा लैटिन रूट के थ्रू सीखते हैं. And these are the other words that we will be learning. So let us get started और देखते हैं कि ये कैसे words को हम याद कर सकते हैं, right? So the first one that I have taken is ambidextrous. Before I go for this very long word, I have got this one for you. In Latin, right hand को क्या बोलते हैं? राइट हैंड को लैटिन में बोला जाता है डेक्स्टर, DEXTER. And for left hand in Latin we use sinister. Now you see, हम ना बायस्ड सोसाइटी में ही नहीं है कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन को लेके. वी आर बायस्ड टुवर्ड्स आवर ओन बॉडी पार्ट्स. ऐसा हमेशा माना जाता है कि राइट हैंड इज ऑलवेज मच बेटर दैन दैट ऑफ द लेफ्ट हैंड. सो जब भी कुछ अच्छा काम करना है तो वो राइट हैंड से करना चाहिए. यज्ञ करना है तो राइट हैंड से होना चाहिए. दान देना है तो राइट हैंड से होना चाहिए. कुछ भी गलत काम करना है तो कहाँ से होना चाहिए? वो कहाँ से? लेफ्ट हैंड से होना चाहिए. तो मतलब कहने का मतलब है कि राइट हैंड इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी बेटर दैन दैट ऑफ द लेफ्ट हैंड. ज़्यादा स्किल्ड है ये वाला. अच्छा, हम जब भी किसी लेफ्ट हैंडर को देख लेते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं अरे ये लेफ्ट हैंडर है. सो व्हाट डू वी टेक अ नोट ऑफ इट. लेफ्ट हैंडर्स आर सोसाइटी में बड़ी नॉर्मल सी चीज़ नहीं है ये. तो डेक्स्टर इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी बेटर दैन द सिनिस्टर. Right hand is always considered to be better than the left hand, and that is how the meaning of a very good word that we have got is dexterity. What is the meaning of dexterity? The meaning of dexterity or dexterous or its adjective is dexterous. That means very skilled. That means I would say, I will change the color over here. And I would say that these two are nothing but skilled. Do you understand this? So we have got word like dexterity. And what do we mean by sinister then? Sinister is, like I said, that जो भी डरावना है वो क्या होगा? लेफ्ट हैंड से होगा. That is why this is called threatening and full of evil. डरावना ऐसा वाला is sinister. Say you have a sinister plan. If it say that somebody has a sinister plan to kill a very important person, so that's sinister, full of evil, full of bad intent. What do we mean by ambidextrous? So if you see, this is made up of two roots, ambi plus dexter. Ambi is both, and dexter, now you know, is right hand. Someone's both of the hands will become or to has turned out to be the right hand. कोई भी आदमी जो इक्वली एफिशिएंट है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एम्बी प्लस डेक्स्टर, और वी विल कॉल दिस पर्सन एज एम्बीडेक्स्ट्रस. अगर आपको 3 इडियट मूवी याद हो तो उसमें वायरस कैरेक्टर हुआ करता था. तो वायरस वुड राइट विथ बोथ ऑफ द हैंड्स, विथ लेफ्ट हैंड, विद द राइट हैंड. सो वायरस वाज एम्बीडेक्स्ट्रस. सिंपल. कैसे याद करेंगे? एम्बी का मतलब बोथ, डेक्स्टर का मतलब क्या हो गया? राइट हैंड हो गया. इज दैट ओके? सो नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस वन, वी आर मूविंग टू adroitness. What is the meaning of adroit? थोड़ी फ्रेंच भी सीख लेते हैं. अभी आपने लैटिन सीखा, फिर हम थोड़ी सी फ्रेंच सीख लेते हैं. फ्रेंच में राइट हैंड को बोलते हैं adroit. राइट हैंड इन फ्रेंच इज adroit. And the left hand there is
तो देखो सारे वर्ड्स ऐसे ही तो बनेंगे ना. दिस इज कॉल्ड CA. गॉश. यहीं से I don't have to put the entire perspective again. I said that what is the meaning of adroitness? Adroit, right? Adroitness is skilled. Adroitness is skilled. So what do we mean by this word called GAUCHE? Gauchery. ग्रोसरी पता है ना आपको. ग्रोसरी से आप इसको याद कर लो. गॉशरी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉशरी? गॉशरी इज नॉट अनलाइक सिनिस्टर. इट इज नॉट फुल ऑफ इविल, थ्रेटनिंग. इसका मतलब हो गया ऑकवर्ड. समथिंग विच इज अनसोफिस्टिकेटेड इज गॉशरी. है तो ये कौन सा वर्ड है? ये है फ्रेंच वर्ड. दिस इज नॉट प्रोनाउंस एज CH. दिस इज प्रोनाउंस एज शेवरले वाला. सो दिस इज गॉशरी. गॉशरी का मतलब अजय से दिस ऑकवर्ड, अनसोफिस्टिकेटेड. अगर आपको टाई बांधनी नहीं आती है, अगर आपको रेस्टोरेंट्स में अगर फोक यूज करना नहीं आता है, इफ यू डोंट नो हाउ टू वॉक एंड टॉक टू पीपल, that would be because in French lifestyle there is nothing which is threatening. So that turns out to be awkward and unsophisticated. So probably you're understanding what is the meaning of adroitness. What did I say is in French, right hand is adroit, and this is where we are getting the word adroitness. One more word. So probably I would say dexterity. Where I'll be getting dexterity is Latin root dexter, right hand, and then you have got adroitness, and then there is third one which is very good. This is adept. It is not adapt. Adapt is with A. This is ADAPT. But then we have got adept. EPT. Adept is somebody who is very skilled into one particular thing. कोई टैटू बनाने में बहुत अच्छा है, कोई कोडिंग करने में बहुत अच्छा है, जो कोई खाना बनाने में बहुत अच्छा है. तो what they are adept. They are skilled into something. This is coming from aptitude, right? Aptitude से याद कर सकते हो आप. So what did we learn? We learned dexterity, and then adroitness, and then adept, and then sinister, and then gaucherie. So these are the words that we are learning in this video. So probably this is what is the root that you should learn. Dexter is the Latin root, dexter in Latin, and then droit and gauche we have got as French roots. So this is where we are getting dexterity and ambidextrous. Ambidextrous is somebody who is skilled with both of the hands. Sinister, now you understand. Adroitness. What do we mean by maladroit? Maladroit, I will say, is somebody who is badly skilled. अब ये कहां से याद करेंगे, ये इसको हम बाद में याद कर देंगे. All that you can understand is there is something called malice. This malice root is bad. Malign, malignant, malefied. So you will have to watch this video just to make sure that you understand all the words from malice. So what did I say is, if you're talking about maladroit is MAL plus adroit. Adroit is right hand in French, that means skilled, and malice is bad. Somebody who is badly skilled is maladroit. So you go through these words out here. Dexterity, as I said, that cleverness, somebody who is very good at doing something. Ambidextrous, using both hands with equal ease, is called ambidextrous. Adept, now you understand what is the meaning of adept, is somebody who is expert into doing something. और हमने क्या सीखा यहाँ पे? adroitness सीखा, having or showing skill. Maladroit, what did I say? Somebody who is badly skilled, is inefficient, and gaucherie is awkward or unsophisticated. All these words we have learned over here. So what you should do is just maladroit and ambidextrous में से आप देख लो कि कौन सा आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए.
pause the video, read it. In the meantime, I'm gonna solve it, right? So the governor has been criticized for his handling of the budget crisis. क्राइसिस में अंतर क्या होता है with I and with E? If you do not know how to make from singular to plural, you need to watch this video where we have talked about the entire thing about singular and plural, and this is where you will be learning this difference, crisis and crisis. In the meantime, the government has been criticized for the governor, his handling of the, so probably this is what, maladroit, inefficient, badly skilled, and he is completely, that is to say, completely able to express himself in words or prose. अब देखो सिर्फ literally sense नहीं, figurative sense में हम ये use कर सकते हैं. Somebody who is good with prose and poetry is ambidextrous. Somebody who is good with mathematiक्स एंड बायोलॉजी इज एम्बिडेक्स्ट्रस. कई बार ऐसा बोला जाता है कि भाई किसी को मैथ्स आती है ना, हमारे यहाँ पे कैट वाले में बोला जाता है कि फैकल्टी या तो क्वांट की होगी या तो इंग्लिश की होगी, कोई एक ऐसी फैकल्टी नहीं हो सकती जो दोनों की हो. एंड आई से दैट आई टीच बोथ ऑफ दीज टू. सो इन दैट सेंस हु एम आई एम एम्बिडेक्स्ट्रस. इज दैट ओके? So this is what we had in this video. In the next video, which is video number 4 of the series, we will be talking about the difference between annihilation and obliterate, right? Again, we will be discussing through the Latin root. Watch that video. Till then, bye bye and take care.